Hello, dear students. I welcome you all to the Pharmacy Info line for the next video, that is part 3 for Diploma in Pharmacy Exit Examination. In part 2, wherein we have covered about the eligibility criteria for applying to the exit examination as well as eligibility criteria for registration with the registered with the council, okay, to obtain the registered pharmacist certificate, as well as we have seen the index, or we have discussed about the index. So moving towards part 3 for exit examination, in part 3 we will be talking about the instructions to the candidates. So information bulletin mentions about some instructions which are to be taken into consideration by the candidates appearing for the exit examination. So those instructions we will be looking into the part 3. Okay, so as per the index, in index of information bulletin, whatever are the instructions given to the candidates, those instructions, common instructions, I have taken out the summary, how what all points you should consider. Okay, so summarily if you will see, the information which is to be taken into consideration by the candidates appearing for the exit examination or filling up of the application form for the exit examination, they should first know about these things. Okay, so very first point says that it will be biannually. Okay, the exam will be biannually, that is, it will be in either March or April. In a year, it will be either in March or April, or it will be in September or October in every year. Okay, that means the आप जो भी एग्जाम अभी अपेयर करने वाले हो, it is now in October, and whoever will remain, or whoever will not be able to attend the exam or fails in the exam, or freshly to whoever students want to apply for the exit examination, those who could not, they can apply in March or April. जैसे कि आपके एग्जाम्स होते हैं समर एंड विंटर. ओके, सो सेम वे आपका एग्जिट एग्जाम होगा. सो इन अ ईयर इट विल बी ट्वाइस, दैट इज एक बार मार्च या अप्रैल में होगा और एक बार सितंबर या अक्टूबर मंथ में होगा. दिस इज कॉल्ड एज बाय एनुअली. Okay, so next is read the information bulletin carefully for DPEE October 2024 session. So information bulletin, it is of 94 pages. So the PDF, you will not feel like reading that PDF, whole PDF. So I have brought these videos for you, the crisp information of that information bulletin, so that you will become aware about the facts and figures. Okay, the next point is information provided during the application should be correct and factual. इंफॉर्मेशन जो भी आप मार्कशीट्स या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, मार्कशीट पे जो नाम है वैसे के वैसा नाम फिल करना है. अगर इफ देयर इज अ नेम चेंज, यू आर सपोज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गर्ल्स, मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेटेड नेम should be produced, the proof should be produced for the same. Okay, करेक्ट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए. ओके, फोटोग्राफ जो भी अपलोड करने वाले हैं इमेजेस के हिसाब से ही अपलोड करना है. ओके, ऑल दीज इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू विल बी प्रोवाइडिंग शुड बी करेक्ट. इफ इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, द कैंडिडेट will be debarred from appearing in any future examinations conducted by NBEMS or other institution. जैसे कि आपको अटेंडेंस वगैरह कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो you are debarred from appearing into the final examination. Same way, whatever the information is provided, if NBEMS finds out that the information provided is not correct or not factual, it is false information, then that candidate can be debarred from appearing in any future examinations which will be conducted by NBEMS or other institutions. So please take care that whatever the information you are providing should be true, correct.
NBEMS will not entertain under any circumstances any request for change in the information provided by the candidates. So don't be in a haste. घाई घाई में फॉर्म नहीं फिल करना है. Whenever you will fill the form, take some time, think over it, find out the requirements, be prepared with the requirements. Okay, I'll be giving you the instructions regarding the same also. Please be attentive and please go through the further upcoming videos for the filling up of application form instructions. So NBEMS under any circumstances will not accept the request for change in the information which you have filled. For that reason, in part 1 we have seen that there are two things called as edit window and final edit window. So take the benefit of the edit window and final edit window, and you can again fill the information. You can fill the information number of times. कितने भी बार आप information change करो, it will do. But जो भी आप last data feed करोगे, जो भी last information feed करोगे, that will be considered as final. And please take this thing on a very serious note, that at any circumstances during the edit window also, your name, your email address, your mobile number, your test city cannot be edited. So please give a thought before filling up of the application form, and then only go for the filling up of application form. Okay. NBEMS itself does not edit, modify or alter any information entered by the candidate under any circumstances. आपने जो भी information fill किया है, solely you will be responsible for that information, because NBEMS, which is the examination authority, do not have any rights to modify that information, to alter that information or to edit that information. Okay. So candidates, however, shall be able to rectify the deficiencies in their application if so communicated by the NBEMS regarding the images and the documents uploaded by the प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट्स. ओके, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी आता है तो NBEMS विल कम्युनिकेट विद द कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज थ्रू email, whatever the email ID you have provided. So please, whatever email ID you are providing, see to it that that email ID is active and you are regularly checking those mails, or you are regularly going through the inbox. Okay, and the secondary mode of communication will be short messaging service, that is SMS. Okay, so जो भी deficiency आता है NBEMS अगर communicate करता है तो आपको वो changes करने हैं. Applications can only be submitted through NBEMS official website, which is given here as well as in the description box. Okay, you are supposed to go to that website and then start filling up of the application form. As and when I will come in the next part on the instructions for filling up of the application form. Okay, so you need to take care for those things. और आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फिल करना है. No hard copies, nothing will be entertained. Any other mode will not be entertained for filling up of the application form. Then it shall be the sole responsibility of the applicant to ensure that the application submitted is complete in all the aspect as per the information bulletin. जो मैं information आपके साथ share करने वाली हूँ, all the information is given in the information bulletin. आपको वो फॉलो करके वो फॉर्म फिल करना है. It will be the candidate's responsibility fully. Edit window, we have talked about edit window in earlier video also in part 1, which will be from 16th to 18th of September, wherein you can edit any information, but once you confirm your name, test city, nationality, mobile number, email ID, you cannot change this information even in edit window. But whatever the remaining information you will change, number of times you can change it, but the last submitted information will be final. Final edit window, again it will be from 24th of September
till 25th of September, and it will be related to image uploads only, that is photograph, signature, thumb impression. If NBMS finds that there is any deficiency or discrepancy, it will report or it will communicate with you on the official mail ID, and you can change that in final edit window period. No further opportunity shall be given to make the corrections. मतलब कोई भी corrections करने के लिए edit window और final edit window के बाद आपको option नहीं है. Failure to submit the images as per the guidelines or failure to rectify the images shall invite the rejection of application. अगर आपने prescribed गाइडलाइंस के अनुसार फोटो, सिग्नेचर, सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, मतलब हॉल टिकट जो होगा, इट विल नॉट बी इशूड to the candidates who are declared ineligible. मतलब जिनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुके हैं, जो इनएलिजिबल डिक्लेयर हो चुके हैं, उनको हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा. इन सच केसेस एंटायर फीस विल बी फोर्टिफाइड. फीस फोर्टिफिकेशन. नाउ you might be aware that the fees is very high also, that is 5,900 including GST. Not only that, but the fees under any circumstances is not refundable. So कौन से ऐसे conditions है, अगर आप absent रहते हो, एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता है, डेमो टेस्ट भी हो जाता है, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम इफ यू आर एब्सेंट, देन ऑल्सो योर फीस इज नॉट रिफंडेबल. By any circumstances you have to appear for the exam. If not, it will be your responsibility. NBEMS is not going to refund any of the amount. Then अगर ineligible भी declare होता है candidate through NBEMS, then also fees will not be refunded. Only in case during the payment through payment gateway, if your transaction doesn't proceed and गलती से कभी कभी ऐसे होता है कि 2 बार अमाउंट कट हो जाएगा. अगर 2 बार अमाउंट आपका ट्रांसफर होता है तो 1 अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू इन दैट केस, बट not in other cases. Okay, NBMS can withdraw permission at any given point of time. किसी भी point of time पे अगर NBMS को लगता है कि आपने information गलत फीड किया है और या फिर कोई unfair means है, कुछ भी कोई भी matter which is not acceptable, then NBMS can withdraw permission at any given point of time. नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ फीस. मतलब आप अगर बोलोगे कि मैं विंटर अपीयर नहीं कर पाई या समर अपीयर नहीं कर पाई तो मेरा फीस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल. कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा फीस, या फिर एब्सेंट भी हो तो रिफंड भी नहीं होगा. ओके, इंस्ट्रक्शंस इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन are liable to change based on the decisions taken by the NBEMS from time to time. अगर if revised circulars comes, then as per the revised circulars, if they feel that there is a need to change any information, तो NBEMS चेंज कर सकता है इंस्ट्रक्शंस में. वो आपको ध्यान में लेने हैं, आपको अपडेटेड रहना है. जो भी सर्कुलर्स आएंगे उनको प्रॉपरली रीड करना है. Then alter the examination, it can also alter the examination schedule, examination pattern, policy and guidelines at any point of time. मतलब policy guidelines तो change कर ही सकते हैं, but exam का schedule भी they have authority to change, exam pattern also they have authority to change at any time. Okay, but only after the official communication received from Government of India or Pharmacy Council of India. Okay, so how we people will come to know? We people will come to know through the recent updates, official circulars. Okay, then candidates are not advised to canvass NBEMS. मतलब आपको किसी भी तरह का फर्जी काम नहीं करना है, किसी भी NBEMS ऑफिशियल को किसी भी तरह का beneath the table
नथिंग यू आर नॉट सपोज टू कैनवास द रेगुलेटरी बॉडी या फिर एग्जामिनेशन अथॉरिटी इन एनी सेंस। किसी भी ऑफिशियल से भी कांटेक्ट नहीं करना है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी फ्रॉड, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। okay, candidates are advised to familiarize themselves with the route and the location of the exam center। मतलब जो भी एग्जाम सेंटर आपको अलॉट होगा, इट विल बी द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट themselves acquainted with the लोकेशन, बिकॉज इट माइट पॉसिबल दैट आप घर से निकलते हो 8:30 AM का मॉर्निंग को रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप वो प्री कैलकुलेशंस करके उस हिसाब से निकल सकते हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, बहुत से ऐसे कैंपस है जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ गेट तक प्रोवाइड होता है, बट कैंपस के गेट से आपके सेंटर का लोकेशन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है। सो यू फर्स्ट मैप ऑल दोज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड हाउ यू आर सपोज टू रीच टू द सेंटर एग्जैक्टली ऑन द टाइम। Then use of mobile phones, electronic devices is strictly prohibited in the premises or test center. So please take this thing into consideration. No heavy jewelry, no ornaments. You are supposed to go simply with the documents to the exam center. जो भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है इन द अपकमिंग वीडियो, आई एम गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ दैट। आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है, कौन से फॉर्म में लेके जाना है, कोई सॉफ्ट कॉपी एंटरटेन नहीं होगा। यू आर सपोज टू टेक ऑल द हार्ड कॉपीज एंड वॉट एवर मटीरियल इज रिक्वायर्ड, all those information I'll be sharing with you in the next upcoming video। okay, so a very important instruction to the students के डेमो टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में भी बोला है, it will be tentatively from 20th of September onwards। so आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फॉर्मेट पता चल जाएगा। इट विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। सो आपको वो वेबसाइट रेफर करके आपको डेमो टेस्ट देना है, so that you can be well acquainted with the computer based test examination pattern। so with this I thank you for patient listening. Stay tuned to the next parts of the DPEE series videos for more updates. Thank you.